श्री पंचमुखी हनुमत्कवचम्। ओम श्री पंचवदनायाञ्जनेयाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन् मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, पंचमुख विराट हनुमान् देवता, ह्रीं बीजम्, श्रीं शक्तिः, क्रौं कीलकम्, क्रूं कवचम्, क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्री गरुड उवाच अध ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलम् सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमम् पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम्। जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परम् ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम्। पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यम् पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ओम हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम् यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजम् वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुत इति कीलकम्। श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत। ओम अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ओम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ओम अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखायै वषट। ओम अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट। ओम पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट। पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। अथ मन्त्रः ओम श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय
लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दुष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारडाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं लं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रह पर्यन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रम् सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यम् पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च जपेन्नित्यम् सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यम् सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यम् सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यम् सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यम् सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् मिष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यम् राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यम् त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यम् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुख विराट् हनुमान् देवता ह्रीं बीजम् श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकम् क्रूं कवचम् क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमम् त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तम् सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रम् कोटिसूर्यसमप्रभम् दंष्ट्राकरालवदनम् भ्रिकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रम् नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषम् भीषणं भयनाशनम्
पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्रीपञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः पञ्चमुखवीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुत इति कीलकम् श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः ॐ अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम् ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः अथ ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालङ्करणम् त्रिपञ्चनयनम् देदीप्यमानम् रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिम्हलम् खड्वाङ्गम् फडिभूरुहम् दशभुजम् सर्वारिवीरापहम् अथ मन्त्रः ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दुष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 लुं
आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं ळं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रह पर्यन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रम् सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यम् पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च जपेन्नित्यम् सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यम् सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यम् सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यम् सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यम् सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् मिष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यम् राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यम् त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यम् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुखविराट् हनुमान् देवता ह्रीं बीजम् श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकम् क्रूं कवचम् कैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अध ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमम् त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तम् सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रम् कोटिसूर्यसमप्रभम् दंष्ट्राकरालवदनम् भ्रिकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रम् नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषम् भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रम् वक्रतुण्डं महाबलम् सर्वनागप्रशमनम् विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रम् कृष्णं दीप्तं नभोपमम् पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरम् दानवान्तकरं परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परम् ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रम् हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गम् पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षम् धारयन्तं कमण्डलुम् भिन्दिपालं ज्ञानमुद्राम् दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तम् सर्वाभरणभूषितम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्
सर्वाश्चर्यमयम् देवम् हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रम् शशाङ्कशिखरम् कपिराजवर्यम् पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशम् मनसा स्मरामि मर्कटेशम् महोत्साहम् सर्वशत्रुहरम् परम् शत्रुसंहर माम् रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदम् परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम् यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्रीपञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः पञ्चमुखवीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजम् वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुत इति कीलकम् श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकम् विन्यसेत ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्याम् नमः ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम् नमः ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्याम् नमः ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्याम् नमः ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः इति करन्यासः ॐ अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम् ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः अथ ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालङ्करणम् त्रिपञ्चनयनम् देदीप्यमानम् रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिम्हलम् खड्वाङ्गम् फडिभूरुहम् दशभुजम् सर्वारिवीरापहम् अथ मन्त्रः ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दुष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारडाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा ॐ कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय गरुडाननाय
पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीता शोक निवारणाय श्रीरामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिन्यंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वरप्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च जपेत् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेत् नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठेत् नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेत् नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेत् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेत् नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेत् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेत् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेत् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। ओम श्री पंचवदनायाञ्जनेयाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्री गरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनं ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ओम हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय
सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुख हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुखवीर हनुमान् देवता हनुमानिति बीजम् वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुत इति कीलकम् श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकम् विन्यसेत। ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्याम् नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम् नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्याम् नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्याम् नमः। ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः इति करन्यासः। ॐ अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट। ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट। पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालङ्करणम् त्रिपञ्चनयनम् देदीप्यमानम् रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिम्हलम् खट्वाङ्गम् फणिभूरुहम् दशभुजम् सर्वारिवीरापहम्। अथ मन्त्रः। ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दुष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं लं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा।
इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च जपेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुखविराट् हनुमान् देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटीकुटिरेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिरमुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः पञ्चमुखवीरहनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुत इति कीलकम् श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत। ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।
इति करन्यासः। ॐ अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट। ॐ पञ्चमुख हनुमते अस्त्राय फट। पञ्चमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालङ्करणम् त्रिपञ्चनयनम् देदीप्यमानम् रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिम्हलम् खड्वाङ्गम् फडिभूरुहम् दशभुजम् सर्वारिवीरापहम्। अथ मन्त्रः। ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दुष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीर हनुमते परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं ळं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय गरुडाननाय पञ्चमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रम् सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यम् पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च जपेन्नित्यम् सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यम् सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यम् सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यम् सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यम् सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् मिष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यम् राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यम् त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिम् पठेन्नित्यम् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायाम् श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तम्
श्री पंचमुख हनुमत् कवचम् सम्पूर्णम्।